Welcome to Ardent Tutorials. Today we are going to study Civics chapter number 1, Introduction to the Parliamentary System, Standard 8. दोस्तों अगर ये चैनल पे आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and share this video to your friends, your classmates more and more and hit the bell icon for new notification. So चलो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे filling the blanks. Question is, choose the correct option and rewrite the statement. Number 1, parliamentary system of government developed in dash. So कहाँ develop हुआ है ये parliamentary system? Answer है England. Let's see the second question. In the presidential system, dash is the executive head. Executive head कौन है presidential system में? Answer है the president. Next question देखते हैं. Explain the following statement with the reason. तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया है उसको हमें रीजन के साथ, रीजन मीन्स वाई, तो हमें इसको रीजन के साथ आंसर लिखना है. इंडिया एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों अडॉप्ट किया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं? तो उसका आंसर ये है. फर्स्ट आई विल रीड द आंसर and then I will explain step by step. Okay. Answer is, India adopted the parliamentary system of government for several reasons. बहुत कारणों की वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया है. क्या है देखते हैं. The development of parliamentary institutions started during the British rule. तो ये जो सिस्टम है ये अभी का नहीं है. जब ब्रिटिश आए थे तब से ये सिस्टम वो ब्रिटिश फॉलो करते थे. ठीक है. The British ruler governed in accordance with this system. Indian were familiar to this system of government. तो ये जो सिस्टम है ये ब्रिटिश पहले से एडप्ट कर चुकी थी, यही सिस्टम से वो काम करते थे. तो इतने साल इंडिया में ये ब्रिटिशर्स रहे हैं, ठीक है, और यही सिस्टम वो फॉलो करते थे. तो इंडिया को ये सिस्टम पहले से पता था. ये सिस्टम उनके लिए फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब होता है ठीक से जानना, मतलब जो चीज हम ऑलरेडी जिसके बारे में हमें पता होता है उसे फैमिलियर कहते हैं. ठीक है. सो मैनी डिस्कशन टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओवर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ कि लाइक कौन सा सिस्टम हमें अभी आगे रन करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है टू रन द कंट्री. तो पूरा फाइनली डिस्कशन के बाद एक ये कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ ही जाना चाहिए, बिकॉज ये सिस्टम ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में पहले से रखा गया था. ठीक है, और ये सिस्टम इंडिया में पहले से लोग जानते थे. दैट्स व्हाई फाइनली ये हुआ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को इन्होंने कंफर्म कर दिया. हाँ, बट उसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़े जो एग्जैक्टली इंडियन सिचुएशन को सूट करे, इसीलिए इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे और फाइनली इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया. ठीक है. सो यही आपका आंसर है. द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्यू चेंजेस इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम टू सूट द इंडियन सिचुएशन and finally India adopted the parliamentary system of government. Okay. Again I am repeating answer only. Listen carefully. India adopted the parliamentary system of government for several reasons. The development of parliamentary institution started during the British rule. The British rulers governed in accordance with this system. Indians were familiar to this system of government. Many discussions took place in the Constituent Assembly over the system of government. The framers of the Constitution made few changes in the parliamentary system to suit the Indian situation. Okay, now let's move to the next question. Second, discussion and deliberations are important in the parliamentary system of government. So answer is, discussion and deliberations are an integral part of the parliamentary form of government.
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि सारे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो डिस्कशन, पहले डिस्कशन होता है, उस पर सलाह विचार होता है, एक दूसरे से मशवरा होता है, एक दूसरे की राय जानी जाती है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है. दैट्स व्हाई इन पार्लियामेंट्री टाइप्स की जो गवर्नमेंट होती है उसमें डिस्कशन प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके. क्वेश्चंस रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर. वेलफेयर मतलब जनहित, पब्लिक मतलब जनता, और वेलफेयर मतलब हित. तो जनता के हित के जो फैसले होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है. इमीडिएटली कोई भी नियम, कोई भी कायदा पास होता नहीं है. सबसे पहले डिस्कस किया जाता है कि ये क्या ये जनहित के हिसाब से है या नहीं, क्या इससे लोगों को फायदा होगा या नहीं होगा. तो ये सारी बातें इसमें ध्यान दी जाती है. Questions related to public welfare are discussed in the legislature. Members from the opposition party also take part in these discussions. Opposition parties may support the government wherever appropriate, point out shortcomings in policies and laws, put up studies, arguments, and questions, etc. This helps the legislature to make proper law. तो यहाँ पे क्या होता है, ऑपोजिशन पार्टी भी अपना सहयोग देती है, अपने विचारों को रखती है. उनको अगर लगे कि नहीं कुछ चीजें जनहित के साथ नहीं जा रही है या फ्यूचर में उससे लोगों को फायदा नहीं होगा, तो वो अपने डाउट्स, अपने सजेशंस भी वहां पे रखते हैं. इस तरह से सबकी बात सुन के कोई भी एक लॉ पास होता है. ठीक है. सो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in this type of government. Okay. Again, I am repeating the question answers properly. Listen. Discussion and deliberation are an integral part of the parliamentary form of government. Questions related to public welfare are discussed in the legislature. Members from the opposition party also take part in these discussions. Opposition parties may support the government wherever appropriate, point out shortcomings in policies and laws, put up studies, arguments, and questions, etc. This helps the legislature to make proper laws. ठीक है, इसे एक कायदा बनाने में मदद हो जाती है. Let's move to the next question. Answer the following in 25 to 30 words. What is a responsible government? Let's see the answer. The Prime Minister and the Council Minister is responsible to the legislature for all their actions and policies. कौन responsible होता है? Prime Minister and Council of Ministers. Okay. The Prime Minister and the Council of Ministers is responsible to the legislature for all their actions and policies. It means that the Council of Ministers has to work with the legislature. It is for this reason that the parliamentary system is known as a responsible system of government. Decision taken by any ministry or a department is considered as decision of the government. Decision taken by any ministry or a department is considered as a decision of the government. The entire council of ministers is responsible for the decision. That is why this is called responsible government. Okay, understood? Again, I am repeating. Prime Minister and Council Minister is responsible to the legislature of all their actions and policies. Okay, it means that Council of Minister has to work with the legislature. Legislature का मतलब होता है कि पूरे कायदे कानून नियमों के साथ उन्हें काम करना होता है. ठीक है. It is for this reason parliamentary system is known as a responsible system of government. Decisions taken by any ministry or department is considered as decision of the government.
कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी डिपार्टमेंट का डिसीजन एक पूरा गवर्नमेंटल डिसीजन माना जाता है। इसीलिए इस ऐसे टाइप की गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन्यूमरेट, एन्यूमरेट का मतलब होता है एन्यूमरेट का मतलब होता है लिस्ट डाउन, पॉइंट आउट कीजिए। क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स। किसके फीचर्स? प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट की जो एक दूसरा टाइप है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो उसके क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपको बच्चों लिखना है वन बाय वन। ठीक है, तो देखते हैं उसका क्या आंसर है। Okay, so how to start your answer? I will read and explain one by one. Okay, as the head of the state means the president, क्योंकि president system में head कौन है? President है, इसीलिए ये हमें लिखना है। As the head of the state, the president is directed elected by the people. Okay, तो president कौन president का चुनाव कौन करता है? जनता करती है directly वो, या the president is directly elected by the people and is known as the presidential system of government. So president is directly elected by the people. This type of system of government is known as the presidential system of government. So now let's see the features of this type of system of government. Following are some features of their system of government. First is, in the presidential form of government, the legislature and the executive are not directly dependent on each other. Okay, in this type of system, legislature and executive are not directly dependent on each other. The houses of the legislature and the president are directly elected by the people. Third point, the president is the executive head and has lot of powers, including power to implement laws. In spite of such a structure, the legislature and the executive keep a check on each other. एक दूसरे पे नजर रखते हैं. This mutual control over each other can lead to a responsible government. Okay, so this all 4 points you have to learn for the exam. Okay, this all 4 point is very important. You have to list down all these 4 characteristics, then only you will get the marks. Okay, let's see the next question. This is the open-ended question. In this question, you have to write your own answer. Write your own opinion. Own opinion means this answer may be vary by person to person, students to students. Okay. So the point, the main, uh, what we call that, the content is same, but every student has their own way of writing. So you will get the marks in this. Okay. Why is the role of opposition parties important? Write your own opinion. इसमें क्या बोला है कि opposition party का जो रोल है, जो काम है, वो क्यों इतना important होता है, वो आपको लिखना है. So let's see the answer. So answer is, opposition parties are essential in a democracy as they ensure accountability, represent diverse viewpoints, and stimulate healthy debate. They act as a check on the ruling party, preventing the abuse of power and safeguarding minority rights. Overall, their role in promoting transparency and democratic principle is crucial for the functioning of democratic society. That's why this opposition party is very important in any decision making. Okay, so we have studied all the question and answer of chapter 1. So see this video many times, learn it nicely and prepare for your exam nicely. Okay, and share this video to your friends, to your classmates. Okay, and
If you like my video, please hit the bell icon, like my video, share my video, and please write your comments and feedbacks in the comment section box. Okay. Thank you for watching my video, and I will come to soon. I will come again with a new video very soon. Okay. Bye bye. Take care. Thank you so much. This is your Aisha teacher. Take care.